चाहिए था। कबीरदास जी ने कहा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। लेकिन सरकार गहरे पानी में नहीं उतरना चाहती, केवल विदेशियों को लूटने का रास्ता देना चाह रही। इस बिल में सर्विसेज को तटीय व्यापार में शामिल किया गया, जिसमें तेल गैस की खोज, समुद्री शोध जैसे काम आते हैं। लेकिन मछली पकड़ने को इसमें शामिल नहीं किया गया। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को तटीय इलाकों में ड्रिलिंग और खनन का अधिकार मिलेगा। भारत के लाखों मछुआरों के अधिकारों की अनदेखी होगी। क्या यही सरकार का सबका साथ और सबका विकास है? कहीं न कहीं मछुआरों की आवाज को दबाना है। इसलिए हम कहना चाहते हैं सभापति जी, कुछ मछुआरों के हितों पर भी काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मछुआ आवास देने का काम किया था। मछुआ समुदाय के केवट निषाद समाज को उन्होंने तालाबों के पट्टे देने का काम किया था, उनकी पेंशन देने का काम किया था। तो क्या माने मंत्री जी को इस तरीके की कोई योजना नहीं लानी चाहिए जिससे इस मछुआ केवट निषाद समाज के लोगों का कल्याण हो सके? उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो ये जो जातियां हैं, इनको एससी एसटी का दर्जा देने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रस्ताव बना करके भेजा, लेकिन वो भी अभी लंबित है। सरकार निषाद केवट समाज को आरक्षण नहीं देना चाहती। इसलिए सभापति जी हम कहना चाहते हैं, पुराने कानून में बिना लाइसेंस तटीय व्यापार करने पर 6 महीने की जेल या 10,000 रुपए का जुर्माना था। अब इस बिल में बढ़ा करके 15 लाख या कमाई का 4 गुना कर दिया है। ये किसके हित में है माननीय मंत्री जी? बड़ी कंपनियों के लिए तो ये छोटी रकम है, लेकिन जो छोटे जहाज मालिक हैं, जो मछुआरे हैं, वो कैसे इतना बड़ा अर्थदंड दे पाएंगे? इसलिए सभापति जी, इस बिल में डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी जहाज को जब्त कर सकता है। ये प्रावधान सरकारी दमन को बढ़ावा देगा कि क्या ये सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह ईज ऑफ हैरेसमेंट नहीं है? इसलिए सभापति जी मैं कहना चाहता हूं, आज मछुआरों का खाली हाथ और आंखों में पानी, यही मछुआरों की यही कहानी। सरकार उनका समंदर छीन रही है और आंखों में पानी भर करके छोड़ रही। सभापति जी, इस बिल में राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय शिपिंग रणनीति बनाने की बात कही गई है, लेकिन इसमें 2 साल का समय दिया गया है। यानी सरकार के पास कोई योजना तैयार नहीं है, वो बिना सोचे समझे कानून ला रही है। आपका इशारा मैं समझ रहा हूं। मैं एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, ये बिल राष्ट्र विरोधी है। इस बिल में भारतीय समुद्री हितों को बेचने की तैयारी है। ये छोटे जहाज मालिकों, मछुआरों, देशी शिपिंग उद्योग के लिए विनाशकारी है। मैं सरकार से मांग करता हूं, इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए, इस पर व्यापक विचार विमर्श किया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो यह साबित होगा कि सरकार विदेशी कारपोरेट के एजेंडे पर काम कर रही है। अंत में सिर्फ यही कहना चाहता हूं, सत्ता के दीपक जल रहे हैं पर मछुआरे अंधेरे में हैं। चौराहे पर खड़ा हुआ विकास सिर्फ भ्रष्ट तंत्र के फेरे में है। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर डॉक्टर रानी श्री कुमार जी। Thank you, Honorable Chairperson, sir. I rise to talk on this significant coastal shipping bill, which this government claims will promote coastal trade and encourage domestic participation. Despite being a country with about 7,500 kilometer coastal length, 14,500 kilometer inlet waterways length, and being strategically located near major international shipping lanes, we have not utilized our crucial waterways to our full potential. Inland freight transport is just as per Niti Aayog. Maritime transportation, particularly coastal shipping, is widely recognized as a more cost-effective alternative to other modes of transport. So, when this bill was introduced, we hope that this bill would facilitate coastal shipping and promote employment opportunities for our people. But this bill has not only failed to address the crucial issues, it has also made it worse. As per Section 345,
the Director General has been given considerable discretionary power in assessing applications and imposing additional conditions. While flexibility is necessary, excessive discretion without clear guidelines could lead to inconsistent or biased decision making. The Director General is given broad discretionary powers to suspend, revoke or modify licenses. While such powers are necessary for regulation, there are concerns about the lack of checks and balances. If misused, this could lead to arbitrary action without sufficient oversight. The criteria for suspension, revocation or modification of the license are broad, including violations of any conditions of the license or failure to comply with any applicable law. This could be seen as overly vague, leading to uncertainty and potential misuse. These sections does not clearly mention about any appealing process or mechanism for challenging the suspension, revocation or modification of a license. This could leave licensors without an effective way to contest decisions they perceive as unfair or unjustified. The term reasonable opportunity to be heard could be interpreted differently, leading to arbitrary application of the law. A more defined process could ensure fairness and clarity without giving undue power to the Director General of Shipping. As per Section 8 of this bill, the Union Government must publish a national coastal and inland shipping strategic plan within 2 years of the Act's commencement and update it every 2 years. The plan will include assessments of coastal shipping routes, operational improvements, long-term traffic forecasts, best practices, new routes, promotion of Indian vessels and other necessary matters. A committee will be formed to draft the plan, including members from various relevant agencies such as Director General of Shipping, Inland Waterways Authority, major ports, state maritime boards, ship owners, seafarers and maritime experts. The problem with this section is that the strategic plan is mandated to be drafted and updated every 2 years. But who is responsible for its execution? There is no mention of performance monitoring to ensure that improvements are implemented. The committee is only responsible for drafting, not ensuring the implementation. The committee consists mostly of government representatives and some industry players. Key stakeholders like cargo owners, logistic providers and coastal community representatives are missing. Sir, the strategic plan mentioned promotion of Indian vessels, but how this will be done is unclear. No specific incentives, examples of subsidies, tax benefits are mentioned to encourage domestic vessel participation. Developed countries like China, European countries and USA are giving incentives and they are giving tax benefits to their own crews and they are giving more efforts to develop the ports to enhance the shipping traders. But in India, despite playing Indian flags and employed Indian crew, Indian shipping companies has to pay high taxes, but the foreigners are enjoying the exemptions. The exemptions and cost advantages should be given to the Indian shipping traders also. Very good, very good. The Coastal Shipping Bill 2024 introduces stringent penalties to ensure compliance, but a balanced approach is necessary to foster industry growth. While strict enforcement is essential to maintain safety and efficiency, excessive penalties without remedial provisions could discourage new entrants and smaller operators. Currently, penalties under Section 15, 16, 18 impose heavy fines, imprisonment and vessel detention for violations like unauthorized operations, expired licenses and false reporting. However, the absence of grace periods or rectification opportunities may create intended barriers. To promote compliance without stifling participation, the bill could incorporate graduated penalties, warning mechanisms, or rectification periods for minor infractions. This would ensure regulatory discipline while allowing businesses, especially new entrants, to adapt to compliance requirements without disproportionate deterrence. Sir, India's coastline is not just a trade route, it is in a line of defense. We have seen
smuggling, illegal fishing, and even security threats from the sea. But this bill is silent on coastal surveillance, naval coordination, and security measures. Nowadays, drug trafficking through Indian ports remains a growing challenge. One of the most critical measures India must adopt to curb drug trafficking is the enhancement of the port surveillance and the integration of advanced technology in security operations. If India fails to modernize its port security infrastructures, its port will remain soft targets for international syndicates, undermining national security, public health efforts. Sir, கடைசியாக ஒன்றை சொல்லிக் கொள்கிறேன். அண்டை நாடுகளுக்கெல்லாம் பொருளாதார நெருக்கடி வரும்போது உதவி செய்கின்ற இந்த ஒன்றிய அரசு அண்டை நாடுகளால் எங்களது தமிழக மீனவர்கள் பாதிக்கப்படும் போதும் துன்புறுத்தப்படும் போதும் மௌனமாக கையை கட்டிக்கொண்டு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருப்பது மிகுந்த வேதனை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த மசோதா கொண்டு வரப்பட்டால் மீனவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவார்கள். இந்த ஒன்றிய அரசு எங்கள் தமிழக மீனவர்களிடம் மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையுடன் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஆனால் நாங்கள் அப்படி அல்ல. இந்திய மீனவர்கள் எல்லாரையும் எங்களது சகோதரர்களாகவே கருதுகிறோம். எனவே இந்த மீனவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் வகையில் கொண்டு வரப்படும் இந்த மசோதா கொண்டு வரப்பட்டால் நாங்கள் அதை ஆதரிக்கவும் மாட்டோம், அதை நாங்கள் அமல்படுத்தவும் விட மாட்டோம். Therefore, Tamil Nadu government under the able leadership of our Chief Minister taking lot of steps and measures to uplifting the traders. So I request the Union government to follow the steps of our able leader, our Honorable Chief Minister, and uplifting the traders. Therefore, I ask the Union government to modify this bill accordingly, taking into the concern of the coastal state governments, industry stakeholders, and the fishermen community. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member N.K. Pimsandanji. Yes, thank you very much, Mr. Chairman, sir. I rise to support this bill with certain strong reservations and concerns and seeking clarifications from the Honorable Minister. Sir, this bill, there is a Coastal Shipping Bill 2024, that is 2025, seeks to repeal Part 14 of the Merchant Shipping Act 1958, except Section 411, capital A. So the primary advantage of having coastal shipping is that it can result in shaping necessary national and state level policies and programs targeted towards transportation, logistics and trade. So this coastal shipping bill, the government is forced to bring this bill according to my limited information, limited knowledge. This coastal shipping bill 2024 is brought in because of the competition with the foreign flag vessels and the Indian flag vessels. So it is giving a preferential treatment to the Indian flag vessels. That is why I am supporting this bill. So a large number of coastal population is depending on the activities related to the seas and bays. By means of this legislation, government intends to improve the modal share of the coastal shipping from the current rate of 6.4% is the model rate of, as per the present rate of coastal shipping, and it is to be increased to 7.5% by 2030 and ultimately 12% by 2047. Sir, the share of coastal shipping in Japan, European Union, is 5 to 6 times higher than that of India. And as far as China is concerned, it is 7 times higher than that of India. This is the global scenario, global situation prevailing as far as the coastal trade is concerned or coastal shipping is concerned. My specific question to the Honorable Minister is whether the government is able to achieve the target of 12% modal share by 2047 through this legislation alone. According to me, it is not possible unless and until the government have a strong political will to implement the program, implement the provisions of this bill in a better way. Sir, through the bill, though the bill is a welcoming step as far as Indian flag vessels and operators are getting preferential treatment in coastal trade to foreign flag vessels, I have some reservations, strong reservations and concern. I would like to flag it as one by one. Sir, number one, that is regarding
I'm seeking the explanation or the clarification from the Honorable Minister. That is regarding the applicability of the Act. Sir, Clause 1 of the Act says that this Act shall apply to every Clause A. Clause 1, Subclause A, every vessel other than the Indian vessel engaged in coasting trade irrespective of the place of residence or domicile of the owner. Clause B, every chartered vessel referred to in Chapter 4. This is the provision which is given applicability of the Act according to Clause 1. Sir, coming to Clause 6 of the bill, it is very specifically stated that every vessel, including Indian vessels, engaged in coasting trade shall report to the Director General the following information in such form and manner as may be prescribed, namely. So, applicability of the Act is, I have clearly mentioned in Clause 1, applicable to only this vessels other than, it is applicable only to every vessels other than the Indian vessel. But Clause 6 is very clear that is Indian vessels also it is applicable. I am not going to Chapter 6 of the Act. There is a specifically it is stated that Indian vessels will be applicable according to Chapter 6. But this 6, it seems to be contradictory because one way it is applicable only to these vessels and here it is in a different way by virtue of Clause 6. That is the first clarification I am seeking. And second one is regarding the definition of cooperative society. And the limited liability partnership is not provided. Definition for these two terms, cooperative society, as well as the limited liability partnership is not provided in the bill, either in this bill or in the Merchant Shipping Act or in the notified merchant shipping bill. It is not specifically, the definition is not provided. That is the second concern I would like to make. And the third one is regarding Clause 18A. Clause 18, Subclause A of the bill. When the licensee failed to furnish the information required by Director General within the stipulated time, it attracts harsh punishment. Just now, my learned friend has already spoken about it. That is, what is the punishment? Punishment is imprisonment for 6 months and fine up to 50,000 or both. If a operator or vessel owner is not providing the information as required by the DG Shipping, then there is a punishment for 6 months imprisonment or 50,000 rupees fine, or both means that is a disproportionate punishment is provided in Clause 18A. That is not fair according to me. So that has to be looked into. And also further, at the same time, it is in section. So another point to be noted is under Section 35(2), Clause 3. The Director General can ask any other matter as may be prescribed. So absolute discretion is provided to the DG. When you are having disproportionate punishment on one side of 6 months imprisonment and 50,000 rupees fine or both, and at the same time it is a discretionary power is given to the Director General that any matter as may be specified can be asked for information or require information from the concerned persons. That means unfettered authority, discretionary powers is vested with the Director General. That has to be looked into as it is arbitrary in providing excess powers to the Director General. And the fourth concern is regarding under Section 26(1) and Section 30, Clause 5 of the bill. That is the offences mentioned under the penal provisions under Section 15 to 25 all are compoundable. That also one side it is harsh punishment and other side all are compoundable offences. It may lead to bureaucratic corruption and thereby harassing the operators or licensees. And the fifth point is there is no dispute resolution mechanism for promoting ease of doing business. The government is always talking, almost all the legislations are for ease of doing business. If you want to achieve this ease of doing business, there should have a dispute resolution mechanism should be there. Unfortunately, in this bill, it is missing. That is to be looked into. Sir, I would like to conclude my speech with 2-3 suggestions also. Sir, number one suggestion is, since large part of the coastal shipping in India is in the unorganized sector, state government and district authorities should also be allowed to issue licenses for small vessels and country boats which are conducting voyages on shorter routes and are at the cross-border level in border areas. The second suggestion is the process of getting vessels registered should be made easy
with fewer documents in transparent and digitalized manner, and special assistance should be provided to vessel owners. Number 2. And the third one is the National Register of Coastal Shipping must be made available in the public domain with the integration from other relevant organizations such as Director General of Foreign Trade. And sir, I'm finishing. And the fourth one is dispute resolution mechanism, which I've already explained that should be established. Sir, I'm concluding the success of the regulatory framework depends on the efficiency and transparency of enforcement mechanism, as well as the capacity of the Director General Shipping to handle the increased responsibility. Hope that the government will consider these suggestions and concerns, then that will be addressed in future amendments. With these words, I conclude. Thank you very much, sir. Thank you. Honorable Member D. Ravi Kumar ji. D. Ravi Kumar. தலைவர் அவர்களுக்கு வணக்கம். இந்த மசோதா ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிற மசோதா என்பதால் முதலில் பாராட்டுகிறேன். ஏனென்றால் இதன் மூலமாக ஈட்டப்படுகிற வருவாய், கடல் வணிகத்திலே ஈட்டுகிற வருவாய் என்பது பிற நாடுகளை ஒப்பிடும்போது இந்தியாவில் மிக குறைவாக இருக்கிறது. சீனா நம்மை போல 7 மடங்கு இதன் மூலமாக வருவாய் ஈட்டுகிறது. எனவே இப்பொழுது அந்த வருவாயை கூட்டுவதற்காக எடுக்கப்படுகிற இந்த நடவடிக்கை பாராட்டத்தக்கது. இந்தியாவிலே நீண்ட கடற்கரையை கொண்ட 2வது பெரிய மாநிலம் தமிழ்நாடு. 1076 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள கடற்கரையை கொண்ட மாநிலம். 3 பெரிய துறைமுகங்கள், சென்னை, எண்ணூர், தூத்துக்குடி துறைமுகங்கள், 17 சிறு துறைமுகங்களை கொண்ட மாநிலம் எங்கள் தமிழ்நாடு. அங்கே இருக்கின்ற இந்த கடல் வளங்கள், கடல் வணிகத்தை பெருக்குவது, இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு, குறிப்பாக மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் 2023ஆம் ஆண்டிலே இதற்கான ஒரு கொள்கையை வகுத்திருக்கின்றார்கள். அதிலே இந்த கடல் வழியை பயன்படுத்தி வர்த்தகத்தை அதிகப்படுத்துவது, குறிப்பாக சரக்கு போக்குவரத்தை அதிகப்படுத்துவது. ஏனென்றால் சாலை போக்குவரத்து இன்றைக்கு நெரிசல் மிகுந்ததாக மாறிவிட்டது. எனவே கடல் மார்க்கமாக சரக்கு போக்குவரத்துகளை அதிகப்படுத்துவதற்காக அந்த கொள்கை வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கான நிதி உதவியை அவர்கள் ஒன்றிய அரசிடம் கோரியிருக்கிறார்கள். எனவே அதற்கான நிதி உதவியை ஒன்றிய அரசு கொடுத்து அதை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அங்கே இருக்கின்ற 17 சிறு துறைமுகங்களிலே சில துறைமுகங்கள் கேப்டிவ் போர்ட்ஸ், அது குறிப்பான ஒரு நோக்கத்துக்காக பயன்படுத்தப்படுகிற துறைமுகங்களாக இருக்கின்றன. அவற்றை மேம்படுத்துவதற்காகவும் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு அரசு பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. அதற்கும் ஒன்றிய அரசு ஒத்துழைக்க வேண்டும், நிதி உதவியை அளிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இதிலே இந்த சட்டத்திலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற ஒரு முக்கியமான அம்சம், இது டெரிட்டோரியல் வாட்டர், அதாவது கடற்கரையிலிருந்து 12 நாட்டிக்கல் மைல் வரை இருக்கிற அந்த கடற்பரப்பை டெரிட்டோரியல் வாட்டர் என்று நாம் அழைக்கிறோம். அந்த டெரிட்டோரியல் வாட்டர் என்பது ஏற்கனவே மாநில அரசுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கின்றன. மாநில அரசுகள் தான் அதன் மேலே அதிகாரம் செலுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றன. ஆனால் இந்த சட்டம் அந்த டெரிட்டோரியல் வாட்டர், அட்ஜாயினிங் வாட்டர் இரண்டையும் சேர்த்து எடுத்துக்கொண்டு அதற்கான விதிமுறைகளை வகுத்திருக்கிறது. எனவே இது மாநில அரசுடைய அதிகாரத்துக்குள் தலையிடுவதாக இருக்கிறது. எனவே இந்த அம்சத்தை நான் வன்மையாக எதிர்க்கிறேன். இந்த அம்சம், அந்த டெரிட்டோரியல் வாட்டர் என்பது அதிலிருந்து நீக்கப்பட வேண்டும். மாநில அரசுடைய அதிகாரத்திலே தலையிடுவதை ஒன்றிய அரசு நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதுவும் குறிப்பாக கடந்த 17வது நாடாளுமன்றத்திலேயே அவர்கள் இந்த ஸ்மால் போர்ட்ஸ், மைனர் போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும், சிறு துறைமுகங்களை எல்லாவற்றையும் ஒன்றிய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருவதற்காக ஒரு நடவடிக்கை மேற்கொண்டார்கள். 2021 தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் அங்கே பொறுப்பேற்றதும் அதை எதிர்த்து ஒரு கடிதத்தை எழுதினார்கள். அதன் பிறகு அந்த மசோதா நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. எனவே இன்றைக்கு மறைமுகமாக இந்த சட்டத்தின் மூலமாக அதே வேலையை ஒன்றிய அரசு செய்ய முற்படுகிறது போல தோன்றுகிறது. எனவே மாநில அரசினுடைய அதிகாரத்துக்குள் தலையிடுகிற போக்கை ஒன்றிய அரசு நிறுத்த வேண்டும். அதற்கான அம்சத்தை இந்த சட்டத்திலே நீக்க வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்துகிறேன். இன்னொரு முக்கியமான அம்சம், இங்கே பேசிய உறுப்பினர் பிரேமச்சந்திரன் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியது போல இதிலே இருக்கின்ற தண்டனை அம்சங்கள், குறிப்பாக சர்வீசஸ் என்பதும் சேவைகள் என்பதும் இதிலே வர்த்தக நோக்கத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக கடல் ஆய்வுகள் மேற்கொள்கிறவர்கள், ஆராய்ச்சிக்காக போகிறவர்கள் அல்லது வேறு நோக்கங்களுக்காக போகிறவர்கள் எல்லாவற்றையுமே வர்த்தக நோக்க கீழ் இது கொண்டு வருகிறது. இது
தேவையில்லாத மக்களை சிரமத்துக்கு ஆளாக்கும். குறிப்பாக மீனவர்கள், அவர்களை சித்திரவதை செய்வதற்கு அவர்கள் ஏற்கனவே அங்கே கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார்கள். அவர்களை மேலும் துன்பத்துக்கு ஆளாக்குவதற்கு இது வழிவகுத்துவிடும். எனவே அந்த சர்வீசஸையும் இதிலே சேர்த்திருப்பதை நீக்க வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். என்னுடைய நாடாளுமன்ற தொகுதியிலே 19 மீனவ கிராமங்கள் இருக்கின்றன. குறிப்பாக மரக்காணம் என்பது புகழ்பெற்ற, வரலாற்று புகழ்பெற்ற ஒரு துறைமுகமாக இருந்த பகுதி. அங்கே ஒரு துறைமுகத்தை அமைப்பதற்காக அங்கே நீண்ட காலமாக ஒரு கோரிக்கை இருக்கிறது. கடந்த வாரத்திலே நாங்கள் மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்களையும் சந்தித்து நேரடியாக அவர்களிடத்தில் இந்த கோரிக்கை வைத்திருக்கின்றோம். ஒன்றிய அரசு அந்த கோரிக்கையை ஏற்கனவே தமிழ்நாடு அரசின் மூலமாக ஒன்றிய அரசுக்கு அது பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதையும் பரிசீலித்து அந்த மரக்காணத்திலே ஒரு துறைமுகம் அமைப்பதற்கான நிதி உதவியை ஒன்றிய அரசு செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இங்கே பேசிய பல உறுப்பினர்களும் சுட்டிக்காட்டியது போல மீனவர்கள் இன்றைக்கு கடுமையாக பாதிக்கப்படுகிறார்கள். குறிப்பாக இலங்கை கடற்படையால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். நாங்கள் நேரடியாக நம்முடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்களை சந்தித்து இலங்கை கடற்படை நம்முடைய மீனவர்களை கைது செய்து அவர்களை சிறையில் அடைப்பதற்காக நீங்கள் அவர்கள் எல்லையை மீறி சென்றால் நீங்களே கைது செய்து அவர்களை அழைத்துவார்கள், இல்லை என்றால் இது 2 நாட்டு பிரச்சனையாக மாறுகிறது என்று நாங்கள் சுட்டிக்காட்டினோம். இப்பொழுது சீனா அங்கே இலங்கையிலே இருக்கின்ற தமிழ் மீனவர்களுக்கு பெரிய படகுகளை வாங்கி கொடுத்து அங்கே அவர்கள் தலையிடுவதற்கு அவர்கள் முற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களும் வந்தால் இது சர்வதேச பிரச்சனையாக மாறும். எனவே மிகுந்த விரைவில், அதுவும் குறிப்பாக நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் இலங்கைக்கு செல்ல இருக்கின்றார். காலையிலேயே நம்முடைய மூத்த உறுப்பினர் அண்ணன் டி.ஆ. பாலு அவர்கள் அதை சுட்டிக்காட்டினார்கள். அங்கே போகும்போது இந்த இலங்கைக்கும் இங்கே இருக்கின்ற தமிழ்நாட்டு மீனவர்களுக்கும் இடையில் இருக்கிற இந்த பிரச்சனையை சுமூகமாக ஒரு நிரந்தர தீர்வு காண்பதற்கு நம்முடைய அரசு உட்பட வேண்டும். அதற்கு பிரதமர் அவர்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி கேட்டமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, honorable member. Mananiya Mahasasi. Sir, I have to report that Rajya Sabha has passed the Protection of Interest in Aircraft Objects Bill 2025. Sir, I lay on the table the Protection of Interest in Aircraft Objects Bill 2025 as passed by Rajya Sabha on 1st April 2025. माननीय सदस्य श्री दर्शन सिंह सदर जी. सभापति महोदय, ये अभी एक सदस्य हमारे बोल रहे थे 1 अप्रैल, मैं उनको बताना चाहता हूं, ये चैत्र के नवदुर्गा चल रहे हैं, नवदुर्गा का 3रा दिन है। चंद्र घंटा मैया की पूजा आप करें तो आपका भी कल्याण होगा और सद्बुद्धि भी आएगी। मैं नवरात्रि की बधाइयां देते हुए और आज के ये जो हमारा बिल है, इस बिल के समर्थन में बोलना चाहता हूं। तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024, क्योंकि हमारे ग्रंथों में कहा है कि रत्नाकराधोत्पदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्म राज ऋषि रत्नाड्यम वंदे भारत मातरम। हमारी भारत माता की सीमाएं 3 तरफ से समुद्र से घिरी हुई हैं और एक तरफ से हिमालय इसकी रक्षा करता है और समुद्री तटीय और इसके लिए कानून लाना, उनमें सुधार करना, जो बरसों से पंगु कानून बने हुए थे उनमें सुधार करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं आपके माध्यम से मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और इस कोस्टल शिपिंग बिल 2024 का समर्थन करता हूं। इसलिए भी समर्थन करता हूं कि इस बिल के माध्यम से हमारे तटीय क्षेत्रों में समुद्री व्यापार परिवहन को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसका उद्देश्य तटीय शिपिंग को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। मैं इसके प्रमुख बिंदुओं में बताना चाहता हूं कि समुद्री व्यापार को प्रोत्साहन इससे होगा। यह विधेयक तटीय जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन को बढ़ावा देता है, जिससे परिवहन लागत में कमी आएगी, व्यापार को गति मिलेगी। वर्तमान में भारत में कुल बंदरगाह की लगभग क्षमता 3600 मिलियन टन प्रति वर्ष है
और जिसे माननीय मोदी जी ने विकसित भारत की जो कल्पना 2047 तक करी है, उसमें इसको 10,000 MTPA बढ़ाने का लक्ष्य लिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से तटीय शिपिंग सड़क परिवहन की तुलना में कार्बन उत्सर्जन कम होता है, जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह विधेयक हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करता है, जिससे समुद्री परिवहन को और अधिक पर्यावरण मित्र मिलने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए आज मैं इस बिल का भी समर्थन करता हूं कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा। हमारे मित्रगण कह रहे थे कि इससे उन्होंने उदाहरण दिए आदिकाल के, तो हम उस आदिकाल को भी जानते हैं। हम तो उन परंपराओं को, क्योंकि हमने राम सेतु पर भी विश्वास किया, लेकिन आपने तो शपथ पत्र दिए उसके विरोध में। तो मैं तो कह रहा हूं कि राम ना मारे काहू को, और पापी नहीं है राम, और आप उसे मर जात है कर कर खोटे काम। और इसलिए मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि राम सेतु को आपने तोड़ने की कोशिश की, हमने उसको शिपिंग और बंदरगाह को मजबूत करके हमने न केवल व्यापार बढ़ाने का काम किया, हमने विरासत भी दी और विकास भी दिया। ये हमारा मोदी जी का मूल मंत्र है, क्योंकि राम काज करने की खातिर राम की भक्ति समाई, और पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई, और भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं, और जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तैर जाते हैं। और इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ाने के लिए तटीय शिपिंग के विस्तार में स्थानीय उद्योगों को नए बाजार मिलेंगे, रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए गुजरात सरकार ने 2047 तक 2000 मिलियन टन का प्रति वर्ष की कार्गो क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बंदरगाह अवसंरचना का विकास विधेयक के तहत बंदरगाहों को बुनियादी ढांचे के विकास और आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। वर्तमान में 56 परियोजनाएं, इसकी कुल लागत लगभग 41,480 करोड़ रुपया है, कार्यान्वित की जा रही है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और इससे बंदरगाह की क्षमता में लगभग 550 मिलियन टन प्रति वर्ष वृद्धि होगी। और इसलिए मैं यहाँ के जो संशोधन इसमें लिए गए हैं, उसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर इसमें जोर दिया गया है, जिसमें तटीय क्षेत्रों में रहने वाले हमारे आम गरीब जनता, उनकी चिंता, क्योंकि अंत्योदय का लक्ष्य जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था, उसको साकार करने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। और ऐसे नौवहन सेवाओं को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सुरक्षा मानकों के सख्ती में पालन, और इससे आप बार बार हमारे विपक्षी मित्र ये शंका, मुझे ये समझ में नहीं आता है, जब विदेशियों पर हम प्रतिबंध लगाते हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? कहीं ना कहीं कनेक्शन हमको दूसरा दिखाई देता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इस तटीय शिपिंग दौरान सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जाएगा, जिससे समुद्री दुर्घटनाओं में की संख्या में कमी आएगी। यात्रियों तथा माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। इस बिल से हमारी हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। बंदरगाहों और जहाजों के में नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के बंदरगाहों में हाइड्रोजन हब स्थापित करने की योजना बनाई है, और ये भी अपने आप में जिस प्रकार से किसानों के क्षेत्र में हरित क्रांति आई है, ऐसे जल के क्षेत्र में इससे हरित ऊर्जा प्राप्त करने की संभावना बढ़ेगी। नवाचार और अनुसंधान, मैं 2 मिनट में अपना वक्तव्य पूरा करूंगा। नवाचार और अनुसंधान में इसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के लिए, चूंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, नर्मदा मैया के क्षेत्र से आता हूं, हमारे यहाँ बड़े बड़े डैम हैं, उनमें यदि शिपिंग और क्रूज की व्यवस्था हो जाए, हमारे यहाँ कुछ ऐसे समाज रह रहे हैं जैसे कीर समाज है, उसको आरक्षण मिल जाए, जिससे कि उनको
न्याय देने का काम हो जाए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का जो संकल्प लिया है, आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया है, वह इस बिल के माध्यम से ही होकर गुजरता है। और मैं आपसे इसी भाव के साथ न केवल इस बिल के माध्यम से, क्योंकि ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का ये 100वां जन्म जयंती हम मनाने जा रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, उनके माध्यम से कि जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, हार मानूंगा नहीं। और मैं तो आपसे इस भाव के साथ अपनी बात को समाप्ति पर ले जाता हूं। ये मोदी जी के लिए कि सागर की अपनी क्षमता है, पर पांजी भी कब रुकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके बल पर ही कर डाले सातों सागर पार, और तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने, और हम सब के नेता मोदी जी ने कभी न मारी हार, और तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। और इसके माध्यम से ये यदि शिपिंग बिल को मैं पूर्णतः समर्थन करते हुए अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे बोलने का मौका दिया। नर्मदा मैया की जय, भारत माता की जय, भगवान बलराम की जय, और समुद्र देवता की जय। जय हिंद, जय भारत। Honorable member Sri Biriato Fernandez. Thank you, sir. The introduction of the Coastal Shipping Bill 2024, introduced in Lok Sabha in December 24, aims to fundamentally revise India's regulatory framework for coastal and marine trade. Sir, I want to point out certain sections which can create a problem for stakeholders operating in the shipping industries. First of all, there is discretionary authority of the Director General and central government. The bill grants significant discretionary powers to the Director General and the central government, raising concerns about potential favoritism and lack of transparency. The broad authority to direct vessel routes, prioritize cargo or passengers, restrict port entry, and exempt certain vessels from the Act's provisions could lead to preferential treatment of specific entities, undermining fair competition. Next, centralized decision making and the absence of clear criteria for granting exemptions or imposing penalties may disadvantage smaller operators and create an uneven playing field. Additionally, the lack of independent oversight and transparency in decision-making processes heightens the risk of market distortion and raises questions about accountability and impartiality. Safeguards such as independent reviews and other accountability mechanisms are critical to mitigate these risks. Sir, there is a document that is minimum safe manning document. This is a certificate issued by the registrar of the ship, certifying the ranks and qualification required to work on a particular ship. It has been observed that inland vessel seafarers are eligible to sail on Indian coastal ships and river sea vessels. But in many cases, the documentation, training and certification that is required to comply with this is not easy to get. It is very difficult, sir. Hence, the owners and the recruitment agencies of the coastal ships find it difficult to get such inland vessel crew. The registrar should be aware of the ground situation about the crew training. Sir, there is also a certificate called Certificate of Equivalence. All the Indian officers and engineers who get their competency license from foreign countries, which are white flag nations like England, Singapore, New Zealand, etc.,
as per International Maritime Organization, IMO, should be given an opportunity to work on Indian coastal ships. It has been observed that there is a shortage of highly trained officers and engineers to work on ships like coastal tankers. So Indian nationals who have taken competency certificates from white flag nations can be employed on these vessels. Presently, rules and regulations are in place, but it has been reported that a lot of difficulties are faced by the owners. And it has been reported that authorized recruiting agencies are finding it difficult to get the certificate of equivalence in MMD. That is Mercantile Marine Department. So amendments need to be done so that these Indian officers and engineers transition from working in foreign shipping to coastal shipping is easy. Coastal shipping will get a lot of benefits from the experience and highly skilled training of the seafarers. So there is a clause 3. This clause prohibits the engagement of vessels other than Indian vessels in coasting trade in the coastal waters unless the license for the same has been granted by the Director General of Shipping. If in circumstances, a ship required for a particular specialized operation and research is not available in India, then on case-to-case basis, the Director General of Shipping should give a specialized license for that shipping foreign registered vessel after verifying all the documents and ensuring that the Indian ship owners do not have such vessels so that the particular operation can be completed. Clause 7 in the bill, sir. This clause provides that no proper officer of customs shall grant clearance to a vessel other than an Indian vessel engaged in coasting trade to enter or depart from a port unless a license is produced by the licensee or agent of such a vessel. It further provides for the detention of a vessel which fails to comply with the requirements of the bill. All the concerned departments which are related to coastal shipping, especially the government agencies such as customs, immigration, port authorities, should be well aware of the latest circulars, orders and notices. So I'll complete by giving some important suggestions, sir. So Indian shipbuilders should be encouraged to install machinery and equipment on the board the coastal ship which are far as possible are made in India, and Indian MSCs should be involved in the ship design. Next, the authority to delegate the statutory certificate of the ship should be given to the ISCS Classification Society. Only 2 more points, sir. Fuel subsidy to be given for coastal vessels. Furthermore, government should support infrastructure for hybrid vessels like battery stations at reduced tariffs and port. When the coastal vessels comes alongside a port, shore power should be made easily available to all the ships. This will reduce the carbon footprints and also enable the ship staff to carry out equipment maintenance. Presently, not many Indian ports have the facility of giving shore power to the ships. Last, collateral free loans for construction of coastal vessels, with the vessel itself being the collateral with an affiliation to the government and same to be mentioned in the registry certificate. Thank you, sir. K. Francis. Sir, I rise to address the Coastal Shipping Bill 2024, a legislation that, while aiming to revitalize India's maritime sector, presents several concerns, sir, particularly for coastal states like Kerala. So the bill's centralization of authority over coastal shipping diminishes the role of state governments, potentially undermining the federal structure enshrined in our constitution. So the states like Kerala with extensive coastlines and unique maritime needs risk losing autonomy over local shipping activities. Sir, this centralization could hinder Kerala's initiatives to develop and manage its coastal resources effectively. So Kerala's economy heavily relies on coastal trade for transporting goods such as spices, seafood and coir products. The bill introduces stricter licensing requirements, particularly affecting vessels not wholly owned by Indian entities. Sir, this could increase operational costs and reduce the availability of vessels, adversely impacting states like Kerala's exporters and importers who depend on affordable coastal shipping options.
Such measure may diminish the competitiveness of Kerala's products in both domestic and international markets. So, Kerala Maritime Board has been proactive in promoting short sea shipping services to alleviate road congestion and enhance regional trade. The centralized control proposed by the bill may impede these localized efforts, stifling innovation and responsiveness to regional maritime challenges. So the state's plans to integrate coastal shipping with inland waterways could face bureaucratic hurdles, delaying progress and economic benefits. Stakeholders within the shipping industry have criticized the bill for imposing excessive control over the hiring of foreign flag ships. Exporters and importers fear that increased transaction costs will undermine the global competitiveness of Indian exports. Sir, the requirement for licenses when charting foreign vessels, even for operations between international ports, adds layers of bureaucracy that could deter business and inflate costs. Sir, while the bill seeks to streamline coastal shipping operations, the introduction of new licensing regimes and regulatory measures risk creating additional bureaucratic obstacles. So this could deter private investment and participation in the coastal shipping sector, which is vital for states like Kerala's economic interests. So the increased penalties and stringent compliance requirements may disproportionately affect smaller operators, leading to a consolidation that favors larger entities. So the concerns raised by various stakeholders suggest that the drafting of the bill may have lacked sufficient consultation with state governments and industry participants. A more inclusive approach could ensure that the legislation addresses the diverse interests and challenges faced by coastal states like Kerala. So engaging with local authorities, industry experts, and community representatives would lead to more balanced and effective maritime policies. So the bill proposes to integrate coastal maritime transport with inland waterways. So if the aim is to, as suggested in the bill, to lower the transportation costs and promote competition within the sector, smaller ports like, Kottayam port in my constituency should be developed. I hope the minister will pay particular attention to this matter. Sir, one last point, sir, Vizhinjam International Seaport. So I would like to invite the attention of the Honorable Minister to this particular issue. Sir, Vizhinjam is poised to be the deepwater container international transshipment hub of the country. Sir, it is in the final stage of commissioning. It developed on a PPP basis, private-public partnership basis. This will bring home the Indian cargo Trans-Malaysia, Salalah and Dubai. Sir, the Maritime India Vision 2030, the Maritime Amritkal Vision 2047. Okay, Honourable Member. All these, please. 1 minute. I'll complete, sir. No. Just 1 minute. Of the Ministry of Shipping, Ports and Waterways gives top priorities to this project. So why I am raising this is, sir, this is the first project to get in principle approval for viability gap funding under the scheme for financial support to private-public partnership in infrastructure. Thank you, Honourable Member. Thank you. So the Ministry of... Sabha ki karwai